Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you for joining us today. As we know, AIC Pinnacle has started. Yeah. Thank you, everyone. We'll start the session in just 1 minute. As we know, AIC Pinnacle has started the Startup Talk series. So last week we have interacted with one of the innovative startup in the healthcare sector. So this week we are going to interact with one of the important innovation in the defense sector. And I would like to tell you this is a 100% made in India solution. So I over to our CEO Avinash Thakur sir to interact with. Participants, please mute yourself. Yeah. You are not audible, I guess. Hello. Hello. You are audible now. I request participant just hold. There is some voice issue. Hello, am I audible now? Yes, you are audible. Okay, your voice again broke. Is it fine now? Yes, it is fine. Audible and yes. Thank you. So thanks a lot to all of you for joining us today. AIC Pinnacle is supported under Atal Innovation Mission, Niti Aayog, Ministry of MSME and Ministry of Electronics and IT, Government of India. So this is our second startup talk series. So we are having Mr. John C. George today. So we are going to have interaction with him. We are going to understand that how this particular startup has started their journey. So Mr. John C, हम सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके जो सारे फाउंडर्स थे उन सबका बैकग्राउंड क्या है। फिर उसके बाद हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहेंगे कि आपने आपकी जर्नी कैसे शुरू की। सो लेट्स अंडरस्टैंड योर बैकग्राउंड, हाउ आपके माइंड में ये कैसे आया कि इस तरह का कुछ स्टार्टअप डेवलप करना है।
So please, over to you, Mr. Chansey. Thank you, Avinash ji. सबसे पहले, before I start, I want to thank, starting with AIC Pinnacle to MITI Startup Hub, NITI Aayog, for an opportunity like this. क्योंकि हमारे जैसे startup को जब इस तरह का एक platform मिलता है, तो it just amplifies everything. तो बहुत धन्यवाद उसके लिए. So just to give you a bit of an idea about my background. So I come from a small town in Maharashtra. There's this place called Bhusawal. वहाँ से कुछ दूर एक छोटा सा गांव है जहाँ पे I was born and brought up. और फिर वहाँ से एक गांव से दूसरे गांव गया. मैंने पढ़ाई वगैरह कंप्लीट की वहाँ पर. तो वहाँ से मैं पुणे आया और यहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया. और फिर यहाँ से मुझे मौका मिला, मैं यूएस गया. वहाँ मैंने नियरली 5 साल मैंने बिताए. आई वर्क विद कंपनीज लाइक IBM एंड इंटेल. और फिर उसके बाद मैं वापस इंडिया आया. तो जब मैं इंडिया आ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ आकर के कुछ करना है, कुछ अलग सा करना है. सिर्फ जॉब ही नहीं करना, जॉब के अलावा कुछ करना है. So with all those thought process, I came back to India. I was not sure at the time कि whether it was the right decision or not. कब आए आप? इंडिया कब आए? मैं 2004 में इंडिया आया. And just to give you an example, उसी मुझे बड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं मैंने सही किया नहीं किया, क्योंकि उस वक्त सारे लोग यूएस से इंडिया जा रहे थे और मैं इंडिया से यूएस जा रहे थे और मैं यूएस से इंडिया आ रहा था. राइट. तो बट उसी दौरान एक मूवी रिलीज हुई स्वदेश, बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी, शायद आपने देखी हो. अच्छा, तो आप इंस्पायर्ड हैं स्वदेश मूवी से? नहीं, मेरे आने के बाद वो मूवी रिलीज हुई, तो मुझे उस कैरेक्टर को देख करके और अच्छा लगा कि स्वदेश जो है वो आपसे इंस्पायर्ड होकर के उसने मूवी हो सकता है. तो मैंने उस कैरेक्टर को जब देखा तो मुझे लगा कि चलो मैं अकेले ऐसे सोच नहीं रखता हूँ, और भी लोग रखते हैं. तो मैंने आने के बाद फिर मैंने कुछ समय यहाँ पे काम किया, बहुत छोटे समय, नियरली 1 ईयर मैंने काम किया. उसके बाद आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर विद माय फ्रेंड्स. तो जब आप वहां से आए तो फिर पहले पुणे आ गए? मैं सीधा पुणे आ गया. मैंने पुणे से अपना करियर स्टार्ट किया और वापस भी इधर ही आया मैं. अच्छा, तो आपने वो डिस्प्लेसमेंट वाली जो थ्योरी है जीरो करने की, वो वाली पूरी कंपनी yes, जहाँ से शुरुआत हुई वहां पे आ गए? बिल्कुल वही आ गया. जीरो से स्टार्ट किया मैंने फिर से. और मेरे कुछ उस वक्त बचपन के दोस्त हैं, तो उनके साथ मैंने अपना पहला फॉर्म चालू किया. वी हैड सम गुड सक्सेस देयर. नियरली 9 years प्लस, लेस देन अ डिकेड मैंने वो फॉर्म चलाया. इट वाज एन IT फॉर्म अगेन, और काफी सक्सेसफुल रहा. उसके बाद मैंने उस वेंचर से एग्जिट करके देन आई स्टार्टेड अ कंसल्टेंसी फॉर्म अगेन. इट वाज अराउंड टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी. और फिर उसके बाद आई गॉट इनटू एन IT प्रोडक्ट कंपनी which had some limited success. और इसी दौरान मुझे while searching for a lot of things, I came across फिर से आऊंगा मैं आपके पास. थोड़ा सा मैं अपने व्यूअर्स को और सारे स्टेक होल्डर्स को एक वीडियो प्ले करके दिखाना चाहता हूँ. बिल्कुल, please. Explosive detection has always been a challenge for security agencies worldwide. Most explosive detection devices are bulky, expensive, and detect only a few types of explosives. Some explosive detectors give successful results in the lab, and some work only in field conditions. Most importantly, these devices are costly to buy and costlier to maintain. It's time to upgrade to a new type of explosive detector, which is 100% made in India. Introducing OPX Revelator, a patent-pending trace explosive detector designed by scientists at HEMRL, a premier laboratory of DRDO India, and a team of engineers at Secumatic Technologies. This multi-year fruitful collaboration between scientists and engineers has finally resulted in a product which can be used by army, bomb detection squads, anti-terrorism squads, police and paramilitary forces, forensic labs, and more such security agencies. The device is capable of detecting and identifying more than 20 most commonly used explosives, including RDX, TNT, PETN, CE, ammonium nitrate, and other such explosives. It uniquely identifies pure explosives as well as traces of explosives mixed with contaminants. Just 10 milligrams of explosive sample is all that is needed. The device is supported by an Android mobile app for easy operation and maintenance. It is handy and gives accurate results both in the field and lab conditions in less than 3 minutes. The device is upgradable and more explosives can be added to the list in the future. It is small and lightweight enough to be carried anywhere.
The device comes with a set of refillable chemical reagents and solvents used for explosive identification. It can be easily maintained and has a much lower total cost of ownership. It runs on a battery that lasts for weeks after charging. What more, the device is so easy to operate that it has only one button. This means any skilled person can learn the device operation within no time. Need one for your organization? Visit www.opxrevelator.com for more details. Let us join hands in making India an Atmanirbhar Bharat. OPX Revelator, 100% made in India product built with 100% trust. Great. Thank you. वापस से अब आएंगे आपकी जर्नी पे। हमने कोशिश किया कि एक छोटे से क्लिप के थ्रू सारे लोगों तक ये चीज पहुंच सके कि आपने किस तरह से बिल्डिंग किया है। सो वी विल अगेन कम बैक टू योर पर्टिकुलर डिस्कशन जो अभी हम बात कर रहे थे। तो इस पर्टिकुलर आइडिएशन के ऊपर आप कब पहुंचे? हुआ ये कि आज से नियरली 4 years अगो इसके ऊपर हमने काम स्टार्ट किया और हमें पता था कि DRDO ने एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला है अराउंड एक्सप्लोसिव डिटेक्शन। दैट वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ दिस प्रोडक्ट। इट वाज प्योरली सेट ऑफ केमिकल्स। उसके बेसिस पे उन्होंने वो प्रोडक्ट निकाला था। वो प्रोडक्ट चल भी रहा था मार्केट में और आर्म फोर्सेस आर राइट एज वी स्पीक यूजिंग इट। तो जब हमने वो उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ा तो ऐसा लगा कि इफ वी ब्रिंग ऐड सम टेक्नोलॉजी टू इट, स्पेशली द टेक्नोलॉजी दैट वी स्पेशलाइज इन, तो उसकी एक्यूरेसी हम काफी बढ़ा सकते हैं और बहुत ज्यादा उसमें हम कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, पहले जो DRDO का जो वर्जन 1 था वो इट कैन ओनली डिटेक्ट 8 एक्सप्लोसिव्स। अब हमने जो वर्जन बनाया है इट कैन डिटेक्ट मोर देन 20, आई मीन 22 प्लस एक्सप्लोसिव्स एक्चुअली डिटेक्ट कर सकते हैं अभी जो हमने बनाया है। तो जब हमें पता चला कि ऐसा कुछ है DRDO ने बनाया है तो वी एंडेड अप अप्रोचिंग देम एंड दे वर काइंड इनफ टू encourage us to do something. It all started like an unofficial engagement जहाँ पे उन्होंने कहा कि आपके पास कुछ है तो प्रोटोटाइप आप दिखाइए। So हमने एक प्रोटोटाइप बना करके दिखाया, they liked it and that's how our engagement with DRDO started. It तो was ये never 2004-2006 के टाइम के आसपास का period? नहीं, ये है 2017 के आसपास की बात है because this is my third venture. Okay. And 2017 में वो हमने पढ़ा कि DRDO ने कुछ ऐसा किया है जो मार्केट में चल रहा है। So it gave us an idea कि why don't we approach them and we have lot of values and suggestions for that. अगर मौका मिलता है तो हम कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसमें। And they were kind enough to accommodate us and so वैसे वो स्टार्ट हुआ जर्नी पूरा। तो थोड़ा सा अपनी बातचीत को थोड़ा और आगे लेकर के जाते हैं जानसी जी। सो व्हाट इज योर आइडिया, हाउ डिफिकल्ट एंड हाउ इजी, दोनों ही टर्म्स में हम बात करेंगे। जैसे नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स के साथ काम करना इतना इजी नहीं है, एक ऐसा भी नोशन है, बट नाउ डेज नोशन इज चेंजिंग। मतलब अब लोग ऐसा भी कहते हैं कि अभी पहले जैसा नहीं रह गया, अब गवर्नमेंट सेक्टर के साथ आप इजिली काम कर सकते हैं एंड वी आर आल्सो वर्किंग विद लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। तो बट स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से, खुद के प्रोडक्ट डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को अपना कुछ स्टार्ट करना है, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप फॉर्मेशन करना है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू आप किस तरह से इसमें बताना चाहेंगे? दोनों ही पर्सपेक्टिव में बताइए, ऐसा नहीं कि सारी चीजें अच्छी ही बतानी है। अगर आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, बिट एक्सपीरियंसेस भी हैं जिसको बाद में आपने किसी और वे से हैंडल किया, क्योंकि कैसा एक थोड़ा रोबस्ट सिस्टम होता है, स्ट्रिंजेंसी रहती है, बट उसको आपने अगर चैलेंजेस को किसी तरीके से हैंडल किया, तो एक ओवरऑल आप एक्सपीरियंस इसमें बताइए कि गवर्नमेंट सिस्टम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, नॉट ओनली विद DRDO बट अदर स्टेक होल्डर्स को भी कंसिडर करते हुए, इन कंसिडरेशन चूंकि आपने DRDO के साथ काम किया है, तो हम कैसे इस चीज को आगे ले जा सकते हैं और फर्दर हम इसको और कैसे डेवलप कर सकते हैं? Okay. आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा बिकॉज आई एम श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आउट देयर हु आर ऑलरेडी वर्किंग विद द गवर्नमेंट सेक्टर, या फिर वो जो भी गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं। तो मैं उन्हें कुछ बता दूं तो मैं शुरुआत गुड न्यूज से करता हूं। वो ये कि गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली ओपन फॉर बिजनेस। आप पहले, मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले जैसा नहीं रहा, पहले भी इट वाज ओपन फॉर बिजनेस, बट स्टार्टअप के लिए इट वाज अ बिट टीडियस एट टाइम्स कि जहां आप आइडिया लेकर के जाओ और वो आपके लिए दरवाजा खोलेंगे और आपको अपना लैब एक्सेस वगैरह देंगे, ऐसे पहले होता नहीं था। लेकिन स्टार्टअप्स के लिए आज ऐसा पॉसिबल है क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हैं। इनफैक्ट द वेरी प्लेटफॉर्म दैट वी आर अ पार्ट ऑफ राइट नाउ इज वन सच प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर स्टार्टअप्स टू इंटरैक्ट विद द गवर्नमेंट। नीति आयोग ने ऐसे बहुत सारे थ्रू अटल इनोवेशन मिशन
बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हैं जहाँ पे स्टार्टअप्स कैन कम प्रेजेंट देयर आइडिया टू द गवर्नमेंट. इवन टू माय सरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंडियन आर्मी व्हिच इज एब्सोल्युटली, इट यूज्ड टू बी क्लोज्ड फॉर स्टार्टअप्स, उन्होंने भी मतलब स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हैं डिफेंस मिनिस्ट्री ने कि आप अपना आइडिया ले जाकर के इनके पास जा सकते हो और आप उनको प्रेजेंट कर सकते हो. दे आर विलिंग टू लिसन, दे आर विलिंग टू गिव एक्सेस टू देयर लैब्स, दे आर विलिंग टू गिव एक्सेस टू, बिल्कुल सही. बहुत कुछ वो कर रहे हैं अभी. उसके अलावा अब बात आती है पैसे की, तो उन्होंने गवर्नमेंट ग्रांट्स भी अवेलेबल कराए हैं आईडेक्स जैसे फंड्स के थ्रू, या फिर टीडीएफ टेक्नोलॉजी डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, डिफेंस स्टार्टअप इंडिया चैलेंज, इस तरह के इसके थ्रू उन्होंने काफी फंड्स भी अवेलेबल कराए हैं. देन प्लेटफॉर्म लाइक अग्नि जो इस तरह के स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट तक ले जाते हैं, तो अग्नि इज अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म, और मैं काफी होप कर रहा हूँ कि हमारे प्रोडक्ट को शायद वो काफी बूस्ट दिला देंगे एट सम पॉइंट इन टाइम. तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है आज स्टार्टअप्स के लिए, विच इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज. बस इसी डिस्कशन को मैं थोड़ा और आगे कंटिन्यू करूंगा. यहाँ पे एक अहम मुद्दा आता है निकल करके, क्योंकि आपका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट था वो डिफेंस से रिलेटेड है. Right. और डिफेंस से रिलेटेड चीजों को कई बार लोग सेंसिटिव तरीके से देखते हैं. उसमें कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें प्राइवेट एजेंसी को नहीं दी जा सकती है, इसमें नेशनल सिक्योरिटी एंड फर्दर बहुत सारे कंप्लायंसेस रिलेटेड चीजें होती हैं. तो आप मतलब इसमें थोड़ा सा आप हमें ये बताइए, ताकि हम सही राइट स्टेक होल्डर्स तक भी इन सब चीजों को पहुंचा सके, कि जब आपने डिफेंस रिलेटेड पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया और आपने ये डिसाइड किया बीइंग अ प्राइवेट एंटिटी इन द फॉर्म ऑफ एलएलपी कि नहीं, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का लाइसेंसिंग लेकर के हम उसको आगे डेवलप करेंगे, तो वो जो फेज था वो चीज कैसे आगे बढ़ा? एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि डिफेंस सेक्टर ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह बंद है, क्योंकि आपको देखना है कि गवर्नमेंट हैज बिकम वेरी एग्रेसिव. हम लोग जो आज नियरली 50% ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करते हैं, एंड दैट टू द डिफेंस बजट बीइंग नियरली 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा है शायद अभी, तो उसमें से 50% हम लोग इंपोर्ट करते हैं. तो गवर्नमेंट ने अभी नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट जारी किया है जहां पर दे वांट सर्टेन थिंग्स टू बी कंप्लीटली मेड इन इंडिया. तो इवन द डिफेंस सेक्टर इज ओपन कि आपके पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है, तो वो अगर आप नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट, आपका जो प्रोडक्ट है उस नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में बिलोंग करता है, तो आपको ही प्रायोरिटी दिया जाएगा. तो इस तरह के सॉल्यूशंस अवेलेबल है आज मार्केट में. मतलब आपको डेफिनेटली ये दिया जाएगा. मैं एक और चीज कवर करना चाहूंगा, क्योंकि आपने 2 क्वेश्चन पूछा था उस वक्त, द गुड पार्ट एंड द बैड पार्ट. द नॉट सो गुड पार्ट मैं थोड़ा सा कवर करूंगा 2 मिनट के लिए. सो गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करना स्टार्टअप के लिए काफी चैलेंजिंग है एट द सेम टाइम, क्योंकि स्टार्टअप जो है वो गवर्नमेंट के जो टिपिकल साइकिल्स होते हैं और उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है. स्टार्टअप्स का ऐसा है कि आप जल्दी से जल्दी आप अपने आइडिया को कन्वर्ट कीजिए प्रूफ ऑफ कंसेप्ट में, हो सके तो फंडिंग लीजिए, उसको आप जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी उसको मार्केट में उतारिए, सो दैट पीपल कैन स्टार्ट बाइंग इट. गवर्नमेंट सेक्टर में इतना आसान नहीं है. आपका जो आइडिया है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना इज वन थिंग. हो सकता है कि वो आप 1 साल में कर लें, लेकिन कभी कभी आपको उसको बेचने में वहां से काफी टाइम लग जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट व्हाइल इट इज ओपन टू लिसन टू स्टार्टअप एंड इट इज ओपन फॉर बिजनेस, उसका अपना एक टाइम होता है. उस पूरे इकोसिस्टम के थ्रू, जितने उस इकोसिस्टम का एक रूल है, उसके कुछ कायदे कानून है अपने, आपको वो फॉलो करना होता है. उसके बगैर आप अंदर नहीं जा सकते हैं, और उसमें कई बार काफी टाइम लग जाता है आपको अपना प्रोडक्ट ये करने में, उस इकोसिस्टम को समझने में. और उसके बाद उनके सेल्स साइकिल काफी बड़े होते हैं. और एक चीज मैं आपको बता दूं, खासकर स्टार्टअप्स को, जब आप बड़े गवर्नमेंट से डील करते हो, जब डिफेंस सेक्टर से डील करते हो, हमें स्टार्टअप में बताया जाता है कि आप एमवीपी पे फोकस करो, विच इज मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, लीन स्टार्टअप मॉडल. ये सब कई बार पूरी तरह नहीं चलता है. गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स अ फिनिश्ड गुड फ्रॉम यू. उनको एक पूरा एक प्रोडक्ट जैसा चल रहा है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रोक्योरिंग अ सिमिलर प्रोडक्ट. तो वो एक्सपेक्ट करते कि आप उसके आसपास से कुछ तो बना के दो. थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाएगा, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास है, आप उसको पहले ले लीजिए और मैं अगला प्रोडक्ट आपको बाद में दूंगा. ऐसा B2C में कई बार होता है, B2B में होता है, B2G में थोड़ा कम होता है. मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बिल्कुल नहीं होता, बट थोड़ा सा कम होता है. तो दोज आर द चैलेंजेस दैट आई सी वर्किंग विद गवर्नमेंट सेक्टर. राइट. तो थोड़ा सा जॉनसन जी अभी इसमें ये बताइए कि जब आप डेवलप कर रहे थे ये सारी चीजों को, तो आपने और किस तरह के चैलेंजेस फेस किए? तो आपने काफी सारी अच्छी चीजें बताई, एक जनरल टर्म्स में भी आपने ये बताया कि
प्रोडक्ट की जरूरत होती है, MVP या लीन मॉडल पे काम नहीं चलता है। काफी सारे जो स्टार्टअप के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं कि भाई गो टू मार्केट होता है, गो आउट ऑफ बिल्डिंग होता है, वो सारी चीजें अलग हो जाती हैं, और जब हमें एक्चुअल काम करना होता है तो डेट इज कंप्लीटली डिफरेंट। सो व्हाट आर द स्पेसिफिक कोर चैलेंजेस यू फेस्ड? ओके, सी एक्चुअली जब से हमें गो एड मिला DRDO से, obviously there was a set of process that was involved to get engaged with DRDO. वो process itself was very time consuming. Simple thing like vendor registration takes a lot of time. वो सब हमने क्रॉस करने के बाद भी काफी सारे hurdles आए बीच में, because there was a time when जब हमें additional funds की जरूरत थी, but at that time to get any fund, any availability, it was not easy. तो और जैसे सेल्फ फंडेड वेंचर टिल डेट हमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो मिला है वो मिटी से ही मिला है, उसके अलावा कोई ग्रांट हमें या कोई इनिशियल फंडिंग सच मिला नहीं है। तो one of the challenge was basically to get funding to do a project like this. It is one thing to get engaged with DRDO, but altogether different to get funded for those kind of projects. मैं ये नहीं कहता हूँ कि पॉसिबल नहीं है, there are a lot of funding schemes available, but हर चीज को टाइम लगता है। अब जब हम अंदर गए थे तो हमें बहुत कुछ मालूम नहीं था, we were not aware of the rules of engagement. Our single-handed focus was to make a great product and make sure that this hits the market. And if DRDO gets engaged with us, हम शायद इसमें से बहुत कुछ कर पाएंगे. So we were just bunch of innovators with great idea. बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज कि ये प्रोसेस समझना होता है, नहीं तो अदरवाइज एवरी सिंगल स्टेप में आपको कुछ ना कुछ हर्डल्स आएंगे, कभी रेगुलेटरी हर्डल्स है, कभी प्रोसीजरल हर्डल्स है। आपको एवरी स्टेप में प्रोडक्ट बनने के बाद भी उसके बाद बहुत सारे थे। हम अभी कस्टमर डेमो कर रहे हैं, इंडियन आर्मी को हमारा डेमो हमने दिया हुआ है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को दिया, बट इट इज नॉट इजी। हर लेवल पे हमें काफी सारे प्रोसीजरल हर्डल्स, इवन रेगुलेटरी हर्डल्स आए हैं। आई मीन द जर्नी वाज नेवर इजी सो फार। एंड या सो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम डिस्कशन में। डेफिनेटली आपकी ये जो सारी तकलीफें हैं या जो भी चैलेंजेस हैं, तकलीफ तो नहीं कहेंगे इसको, ये कहेंगे जो भी रुकावटें हैं, डेफिनेटली वो सारी रुकावटें एक दिन खत्म हो जाएंगी और स्कीमेटिक टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा। AIC पिनैकल हमेशा आपके साथ है उसमें। सो अगर हम थोड़ा सा और इसमें समझने की कोशिश करें, सो इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव क्या रहा आपका, जो वॉट एवर बी द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर यदि हम डिस्कशन करें कि भाई स्टार्टअप को अगर यदि ग्रो करना है तो उसको राउंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लगते हैं, सीड इन्वेस्टमेंट लगता है, VCs लगते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट लगते हैं, बैंकिंग लोन्स लगते हैं, इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है? दैट वाज एक्चुअली द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस जर्नी। इन्वेस्टमेंट मिलना फॉर अ डिफेंस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इज नॉट इजी इन इंडिया। राइट। हमारा जो इकोसिस्टम है अभी वो ग्रो हो रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट के साथ जब कोई स्टार्टअप बिजनेस करता है तो इन्वेस्टर्स आज भी डरते हैं इस तरह के स्टार्टअप्स को फंडिंग देने के लिए। मैंने कम से कम मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, बट नियरली 10 अलग अलग इन्वेस्टमेंट फर्म्स के साथ मैंने इंटरेक्ट किया हुआ है इन द लास्ट फ्यू इयर्स, और आई मस्ट एडमिट कि अभी तक मुझे कोई फंडिंग मिला नहीं है। बट 10 is not less. 10 is not less, you are right. बट बहुत ज्यादा भी नहीं है। मैंने कहानियां सुनी है, लोगों ने 40-50 वेंचर फंड्स को या अलग अलग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को प्रेजेंटेशन दिया हुआ, मैंने उतना किया नहीं। लेकिन आपको बता दूं कि इन्वेस्टर्स का जो टिपिकल जो कॉमन जो डिनोमिनेटर जो है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। उनका टिपिकल पर्सपेक्टिव ये है कि आपको यूजुअली इन्वेस्टर्स दे कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे वो ट्रैक्शन एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ तो प्रूव कीजिए, राइट? तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। कई बार आप कुछ प्रोजेक्ट्स इतने बड़े होते हैं उसमें आप ट्रैक्शन दिखा नहीं सकते। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखा सकते हो कि पिछले क्वार्टर और ये क्वार्टर के कंपैरिजन में हमने एक और एडिशनल फीचर ऐड कर दिया उसमें, क्योंकि वो कस्टमर तक पहुंचाने में कई बार 2 से 4 साल का साइकिल होता है। इन्वेस्टर्स आर नॉट रेडी टू वेट टिल दैट एक्सटेंट। थोड़ा सा टाइम को भी कंसिडरेशन करते हुए हम डिस्कशन को आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने ये स्टार्टअप टॉक सीरीज को जो है हमेशा 30 मिनट्स के ही टाइम स्पैन में रखा है ताकि लोग जो है पॉइंट्स को समझ सके। तो इन बिटवीन वी कैन टेक 1 or 2 क्वेश्चंस, वेरी क्विक क्वेश्चंस हमारे पार्टिसिपेंट्स में से। अगर किसी को मिस्टर जॉन्सी जॉर्ज से अगर इंटरेक्ट करना है, सो वी कैन टेक, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। एक या 2 सवाल हम ले सकते हैं, तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हाय जॉन्सी। हाय। यस शक्ति जी। हाँ, see, this is Shakti here. Jhansi, I have one question. See, we are looking at a new technology for a startup, say in case of, say, data center area, which is a high growth area.
Now, मेरे को ये पूछना था, while establishing the company, one, we will get it registered under startup. What else care we need to take? Because we are talking about some IPs getting developed in the process. Yeah. Because abhi jo chalta hai traditional method, we are not looking at that. We are trying to create a very efficient way of bringing the cost down for data centers. Because जिस तरह की population India की है, if you get it, the amount of density of data centricity or we would require would be huge. और जिस तरह के आप गेमिंग यूज करने लग गए हैं यंग बच्चे, so there is propensity of a huge amount of data requirement, be banking to gaming. So इसके लिए what would be your advice so that we don't go wrong? See, my worry is we would be collaborating with many people across the globe to get some technology and maybe integrating and adding value to it. It will not be taken in the raw form, because raw form में उनकी licensing और वो सारी troubles आ जाएगी, then there is no cost advantage which you are getting for the nation. Right. So what would you advise us at this stage? See, first of all, I would start with understanding the whole ecosystem. आपको ये समझना है कि आप जिस ecosystem का part है, वहाँ पर और क्या-क्या facilities आपके लिए available है. For example, आपने data center काफी आप जो बताया, I mean, probably the right thing to do at the right time. क्योंकि sooner or later we are going to have an equivalent of a GDPR for our country. हमारे पास इस तरह के data protection regulations आ रहे हैं जहाँ पे data will have to reside within the country. तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. You have to understand, you have to very, very closely work with the various government departments, AIC Pinnacle being one such very, very interesting. Then Agni, as I said थोड़ी देर पहले, उस तरह के प्लेटफॉर्म में अगर आप एक्सपोज हो जाते हो, तो आपका जो डेटा सेंटर है, आप वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास जा सकते हो, प्राइवेट एंटिटीज के पास भी जा सकते हो, क्योंकि रेगुलेशंस आने वाले हैं जस्ट अराउंड द कॉर्नर, जबकि आपको डेटा जो है आपको विद इन द कंट्री ही रखना पड़ेगा. तो आपका जो बिजनेस है उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि स्टे इन टच विद द इकोसिस्टम. आई मीन, यू कैन नॉट डेवलप अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, स्पेशली दीस डेज वर्किंग इन साइलोस. आपको एक इकोसिस्टम का पार्ट होना ही पड़ेगा. And whatever is available right now, government is facilitating a lot. Just be aware of some of those ecosystem, be a part of it. आपको बहुत सारा लीड वहीं से मिल जाएगा. आपको नेक्स्ट क्या करना है हो सकता है वही बता देंगे आप. तो if I summarize it, what you are telling me is, first step हम तो startup में register कराएंगे this new entity. Absolutely. Second step, after registration, we should get in touch with AIC or somebody like that, so that we can get help in getting some IPs, because we are trying to develop some IP around the cooling technology, to tell you precisely. Shakti ji, you can get in touch with us. We will solve all your queries, and we have well noted down all your points. Okay, thank you. AIC is there to help you for all this kind of queries. Yeah, absolutely. So yes, so we will go ahead in the discussion. So जॉन्सी जी, जब ये सारी चीजें जब आप डेवलप कर रहे थे DRDO के साथ एंड आगे डेवलपमेंट हुआ, तो इंक्यूबेशन के प्रोसेस में जब आपने इंटर किया, and when you get collaborated with AIC Pinnacle, so what was your overall experience? How was the journey, and how you take all these things ahead? Yeah, definitely. Actually, when we started with AIC Pinnacle, it was new at that time for us, and as AIC Pinnacle itself was very new in the market, and we were not sure what to expect from it. We thought it's an incubation center. At some point in time, it's going to help us interact with the government. इस intention से हम लोग अंदर आए, but when we came inside, we saw much beyond that. The one thing that I must admit in this forum, that the kind of interaction that you have facilitated with the government sector, especially I am banking a lot on the Agni platform that you have introduced us to, because I'm eventually confident that they are going to expose us to a lot of government departments, which is a big problem for startups. So आपने वो introduce करवाया. Then you had given us access to mentors, and those mentors have added a lot of value. We have been through the curriculum that you have for startups through the Vadhwani Foundation. That was very, very helpful. So at every step, and most importantly, the grant that we received through AIC. So I'm very, very thankful for that, because it did help us a lot. So I think it all was a that grant you have received from Ministry of Electronics and yes. IT. Yes, but through AIC. We are just a nodal center. Yeah. Yes, through AIC. Right. But अगर आप AIC नहीं होता in between, तो we were not aware of how to reach there, right? Thank you. I must thank you for that. Yeah. Right. So we will take one or two last questions. So as we are having very short time, then we will go for conclusion. So a quick question related to this particular, a quick query, please. Yeah, this is Shankar. Hi, John C. Hi.
So I just interviewing to know that how it function and what is the IP around it. Actually, in defense, so it is very restricted to get a IP around it. So Yeah. what is the mode of action? How it detects? Like, is it a physical or chemical kind of? Okay. I'll share with you the information that is already there in public domain. There are multiple principles of operation for any explosive detection. So we have chosen just one, which is basically dependent on colorimetry. So what happens is there are some set of chemicals that has to be mixed with these explosive samples. So uske baad it generates some reaction, which our device gets into picture and to capture those reactions and the outcome of Just on lighter note, Johnsy ji, you will have to maintain the IP. Yes. No, I am obviously not going to disclose anything that is not in public domain. I know. You have to maintain. Yeah. So, Please, go ahead. Yeah. So basically, इसी principle of operation में काम करता है, combination of chemical and so it's a multidisciplinary product. It starts with chemical engineering, mechanical engineering, electronics, software, everything. So that's basically the culmination, and you see OPX regulator as the product in the market. Right. Great. So we can expect any. Yes, Mr. Hello. Johnsy. Yes, please go ahead. Can you hear me? Yeah, I can. How long have you been associated with AIC Pinnacle now? It's been almost a year now. Okay. Yeah, it's been almost a year. Yes. When was your startup? We are having very shortage of time. So, Mr. Surya, we will take a off-call discussion if anything is there. Chalega. Thank you, Avinash. Thank you so much. Yes. On the behalf of AIC Pinnacle, I would like to thank Mr. Johnsy George for this particular specific discussion related to all the engagements with the government, all the engagements with the other stakeholders, and how far they have traveled their journey. So on the behalf of AIC Pinnacle, Atal Innovation Mission, Niti Aayog, Ministry of MSME and Ministry of Electronics and IT, Mighty Startup Hub, I thank all the participants for joining us, and every Friday we are going to interact with one startup for understanding their journey. So again, next Friday we are going to interact with another startup. So please stay tuned with us, and if any kind of queries are there, any kind of supports are required related to startups, please stay in touch with us. Thank you, Johnsy. Thank you so much. So thank you. Thanks a lot, all the participants. Thank you.